हेलो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अब हम आ चुके हैं वापस हमारे कोडिंग के लाइव स्ट्रीम पे। तो दोस्तों, आज हम वापस करेंगे। आज ही तीन लाइव स्ट्रीम कर चुके हैं और ये हमारी चौथी लाइव स्ट्रीम है। और ये चौथी लाइव स्ट्रीम में हम करने वाले हैं लूप्स के बारे में। अब बिना किसी देरी के लिए अपन अपना VS कोड ओपन कर ले रहे हैं। समझ में आया? चलो VS कोड ओपन कर लो दोस्तों। हाँ, so we have stopped here. Basically, I am talking in Hindi and English by which you can understand easily. Because the few members don't know English, sorry, few members don't know Hindi and English is known by everyone. So I am trying to make the live stream in English by which many of the people can get the Python knowledge. So let's start. So we have stopped last where we have stopped at the strings. So we go to the strings. We have to load this. This page is not loading. Wait a second. Yeah, let's go. Hmm. We have completed comments. We have completed the basics, addition, subtraction, multiplications. We have even completed the if and else conditions. And we also completed the strings challenges and another challenge and the string here. And here we go for the next multiple line strings. Okay. So here it's asking basic questions challenges. So you can also do, if you want to do this, you can yeah, access this PDF. If you DM me in Instagram, I will send this PDF by which you can also practice these questions. And if you want to see the source code of these questions like this, it's very basic questions. You can do it and you can make practice. So the max, max. I mean, it's using import method for doing max here. Yeah, you can see that here he used import dot square max numpy etc. It's a little bit advanced level, so we will go here after few lectures after completing the loops. Yeah, we go to the loops now. Explanation. For loop allows Python to keep repeating the code set of number of times. It's sometimes known as the counting loop because you know the number of times the loops will run before it start. Here basically it's saying that you can run a code until and unless it will stop. I mean, you can stop by keeping a limit. For example, here there is a code for I in range 1 to 10 print I. It will print 1 to 9 numbers. It will not print 10 because it's hidden method. Okay. So it's like repeating and repeating until and unless the number which you gave at the last. So remember this code. Okay. Then for I in range I 10 comma 20, here it will print 1 3 5 7 9 and it will not print the even numbers because here you can see that it is the range from 1 to 10. I mean, it will print 1 to 9 numbers. Then it's saying that leave the two numbers between each. It's indirectly saying that leave the case 2. I mean, in the range of the function includes the third value, which shows how much is added had added to I in each loop. This output will therefore look like this. If you keep minus 3, the range will subtract 3 from each time. The output will be like this. Okay. So basically, using loops is a powerful programming tool that you will use a lot in more challenging program. Yeah, it's actually the loops are the most important. So for I in word print I, this would display each character in a string called separately.
I will show you how it will work. So let's open VS Code, Control N, Control S. Here we going to loops, so loop.py. Here we run and we say for I in range, sorry, for I in, wait a second, my keyboard is not working good. Hmm. For I in code, print I. If we run, it will print CODE code. You can use end L at the end by which it will print like this end equals to comma space, and then you run, it will show like this. Here using the end L function, it is actually a string type function end L by which the code which we see horizontally become vertically. So it's basically a simple thing that you want everything in single line, then you have to use end L. So next we move to the another page. In this we have the challenges. So in the challenges it's saying that ask the user to enter their name and then display their name 3 times. Okay, it's a nice question. By the way, we can try it. Here we go. Control A, comment it by controls backward slash. Then right here, n is equals to input, enter your name. Then for I in range, for I in range 3, wait a second, for I in range 3, wait a second, does my code is doing something wrong? I have to check once. Yeah, I'm doing great. So, okay. Nothing to worry. We have read 0, comma 3. I think it's said 4 times now. So, if you want to print 4 times, you have to say maybe. Okay, let's try. Print n. Enter your name. One. Yeah, I know that it will work like this. Wait a second, guys. I want to check in YouTube that does my voice is coming or not. So by the way, you can see the code until yeah, it's in live. So by the way, okay, the code is running. So let's move to the another question, another challenge. In the 36th challenge, alter program 035 so that it will ask the user to enter their name and number, then display their name that number of times. Okay. It's very simple. You know that? Like, you want to repeat something, r is equals to int input, enter the number you want to repeat that much time. So if you run this now, wait a second, main thing is here. You have to write in the place of 0, comma 3 in range column r. Then you run the program, enter your name. My name is Numan. Then enter how many times. I want to repeat 6 times. For suppose it will print Numan. And it printed how many times? You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So like this, the loops will run. Now we move to the another challenge. Change the program 037 to
Sorry, here we are sorry, I have reading 38 one. We have to go to 37. Ask the user to enter their name and display each letter to their names on separate line. Whoa, separate line. Slash n. Wait a second, guys. I want to see that it's using slash n or not. Mm-mm-mm. Entering. Okay, okay. It's basically like how we write the code. In this the comment section, like we have committed here. It's basically saying like this. So you can do it. It's no need of writing this much code. Now we move to 8. Change the program to ask for a number, display their name one letter at a time on each line, and repeat this for the number of times they enter. Actually, I didn't understand the question. Change the program 37 to also ask for a number, display their name. It's basically saying how many times I have to repeat the same program of 37. Nah, it's a basic question, man. It's no need to do. You can leave it. Ask the user to enter a number between 1 and 12. Then display the times of and display the times table for that number. Interesting. Are you saying to print me the table? Or what is mean by times table? Uh-huh. I understand it's asking. Basically, it's saying to make the table. You can say directly instead of making it complicated. So Control N, Control S. Here we're saying loop timetable, loop table tab.py. VS Code is much better than ideally what we our college uses. So we move to the next. Here we write the code that uh, you have to take input int n is equals to int input, enter a number, here for I in range 0 comma 13, print, wait a second, print. Okay, once num is equals to enter a number between 1 and 2. It's obviously we can do that, but I don't want to do that. So for I in range 1 comma 13, answer is equals to 1 I into num. Oh, table. Yeah. T is equals to I star in n. Then print I. If we run, I want to see that the code is running or not. After the code will run, we can use fstring and make it more beautiful. By the way, I want to type file table. Oh, it's not worked how I thought. Oh shit, we have to print in, not I. The silly mistakes what we make in exam usually. Now enter the number 5. Yeah, we got the 5 table. If you want to make it look beautiful like table, then you can do some changes like f string using string. Here you have to type I in flower brackets, I x uh, here t, here n, then equals to, then here you will use t in flower brackets, then you run the program. Here you enter 5. Yeah, you got the table. It's very easy, man. It's very easy.
Someone accepted the link. You can also follow, guys. And if you want to make it still better, you can do changes. I mean, if you want to say that what table I have used here, so you can print here, like for example, print a string. Now this is the key table. Okay, now run the program. Here enter number 5 and you can see blah blah blah. Nice. I want to cut this, then this, then this. Here we go to the next program. And what is our next program? We have completed the table. We go to the 40, ask the number below 50 and then count down from the 50 to that number, making sure that you show the number they enter in the output. Yeah, it's very good question, but I don't know how actually I have to do in my mind. I am thinking to use dot count extension, but maybe here he didn't use that. I want to check, just it's not a cheating, but I want to check. Yeah, he used something different. I thought different. Okay. For I in range 50 to num minus 1 comma minus 1, print I. What it actually prints. Let's see. Here we create. It's better to comment, I think. Wasting more papers. It's not paper, but yeah. Now n is equals to int input enter a number. Now I will write. He said that we have to print something. For I in range. I in range 50 comma 50 comma print I. I think I'm saying this one. Let's see. Enter 5. What did it? What does it did? Oh, nice. You printed like this. Oh, I want to do something better. Let's see. Are you understanding? Are you understanding my code? If you don't understand, you can say me in the comments. I will try to make you understand still better. Count I. Does this work? I think so. It will not work. It show me error. I think so. Fine. Yeah, it should be error. So here we can't. Here we don't use it. In the list we can use the count dot something. So okay, nice. This was little tricky. Next we move to another question. Control S. Challenge. Challenge. Dot py. Chell dot py. Chell. Hut. By the way, I want to show that how we can comment our code here in GitHub by directly linking to VS Code. So we are doing loops. So loops, comma, condition, programs. And then we commit, save all and commit all the changes. Then it will move to GitHub. Okay. Nice. I like GitHub very much.
If you want separate video on GitHub, you can say me in the comments. I will make one more video on the GitHub. Okay, guys. Now in shell, what we do, the shell 41 ask the user to enter the name and a number. If the number is less than 10, then display their name that number of times. Otherwise, display the message to hide three times. What three times? Uh, I am getting the code, but I don't think so. It will match the code. I'm thinking to use condition and loops at a time in this. What you think? You guys can suggest me. Ask the user to enter their name. Okay, n is equals to in. Here is saying that ask the user to enter their name and number. If the number is less than 10, then display their name that number of times. Otherwise, display the message to hide. सो मेरे पट्टो इन क्या बोल रहा बोले तो यूजर से हम उसका नाम पूछेंगे, उसका नंबर पूछेंगे। अगर वो 10 से कम हो तो हम लोग उसका नाम उतने बार रिपीट करेंगे जितने बार वो बोला है। अगर ना होगा तो उसको बोलेंगे कि ये टू हाई है। तो करते हैं दोस्तों एक कोड को। इफ n is greater is less than 10, then for I in range and print, उसका नाम ही प्रिंट करना है ना, रेंज m करने का है। सॉरी दोस्तों, यहाँ m लिखने का है। You have to write m here and m here too. Then print here. I want to print I. Am I right? Then we have to go for else. Print to hide Nasha. Run the program. Enter my name Numan. Then enter number of times 5. Sorry, 5. It printed 0, 1, 2, 3, 4. Wait a second, I have to write here n. Again, the same mistake I am doing, so I have to think a lot for this next time. Enter your name, then I will enter Ali 9 times. Yeah, bang, we have completed our code. If we use more number than 10, then what will show? 55. 55 error. Tunasha. Yeah. Okay. Set a variable. Oh, wait a second. We have to check the code. Does we do correct? 41. Let's see. 41. Yeah, we did the correct. And also it said that for I in range 0, 3, print to high. Yeah, we did the correct code, but we didn't in the correct condition. Maybe it's little bit not high and tough question, but it's little bit tricky. Maybe I will get, if it is a 5 marks question, I will get 4 or 3 marks because the program is executing perfectly. Like up to here, it is running perfectly, so it's not a big deal. Okay, we will move to the next question. Set a variable called total to 0. Ask user to enter 5 numbers after each input. Ask them if they want a number of include. If they don't, add the number total. They includes, don't add the total. After enter 5 numbers, display the total. It's very easy question, friends. You can do it. It's sometimes you have to do the questions on your own, by which you can get the answers.
If you want to see the code, I can show. Like here, you can see in 42, total is equals to 0 for I in range 0 comma 5. It's saying up to 5 numbers, so we have used 0 comma 5. Num is equals to int, enter a number, answer is equals to input. Do you want this number include? Yes or no? If yes, the total plus n, print total. It's basically it will add it. So you try this one. You try and run the code and get the output. It's very easy question. So we go to the 43. Ask which direction the user want to count up, down. If they select up, then ask them for the top number, then count from 1 to that number. If they selected down, ask them to enter the code below 20 and then count down from 20 to the number. If they enter something other than up and down, display the message I don't understand. Here basically I will tell what we have to use. Here it is using if condition, elif condition and else condition, also using the loops in it. It's basically saying that if the num is equals to 1 to 20, then it will print. If it is not in that, so I don't understand display. I know it's very basic question. It's a basic question, but it's a little tricky and lengthy, so you can do it. And basically if you want to understand, I can say in Hindi, like एक बंदा बोल रहा है कि अगर आपको बंदे से डायरेक्शन पूछना है कि ये अगर ऊपर से नीचे काउंट करने का है या ऊपर नीचे से ऊपर काउंट करने का है। अगर 1 से लेके 20 के अंदर बोला तो ये आपसे ऊपर तक नीचे 20 से ऊपर नीचे करेगा या कुछ भी करेगा, समथिंग क्या तो एक करेगा ही करेगा। और उसके बाद अगर नहीं करेगा तो आई डोंट अंडरस्टैंड बोल देगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको वो करके दिखाओ बोले तो भी करके दिखाओ। तो अगर आपको चीटिंग करना सीखना है तो कोपायलट से सीखिए, दिखाओ आपको कोपायलट से चीट कैसे कर सकते हैं। लाइक हियर, open the copilot beside, then ask copilot, can you see the screen? If you say yes, then you can cheat. I can't literally see. Oh shit. If you can't see, we can do something fishy. Yeah. You understand correctly. Capture it. Then paste it here. And paste it here. And say, I want this code. And here it is. What I said that I will love someone. Here we create a new one, Control N, Control S, loop, loop, dot py, then Control V, then run. मुझे अब जाना है तो U 565, yeah, मजा आ गया bro. You can see the code here and the output here. So basically we can do anything by using cheating also. Yeah bro, we are great. If the stream is looking bored, you can leave it. I'm saying joking, yeah. I love you, bachas. So the code 44. I don't want to do. My friend, while loop. The most irritating thing in the loops is while loops. I really don't like the while loops. But it is very important, yeah. Like a while loop allows the code to repeat an unknown number of times as long as the condition is determined. This may be 100 times just once or even never. In a while loop, the condition is checked before the code is run, which means it could skip the loop altogether. If the condition is not been met to start with, it's important therefore to make sure the correct code place to run. Here it is a graph start
again is equals to yes, does again yes, then out hello. If no, stop. Like again is equals to s, while again double equals to s, print hello. Again input, do you want to loop again? Bruh, what is this question, bro? It's basically saying that if the while loop is again equals to s, then the code will stop. If it is not, it will loop. Yeah, I think so. Who the hell make this codes यार? कमेंट कर दूंगा तुझे. Here we write that n equals to 0. मजा आ रहा है bro. Here we do, you do, while n is double equals to yes, print hello. Want to repeat, guy? Yeah. Okay. Let's see what we say. Want to repeat. Here we can enhance the code. Here it is repeating the code many times. Like if you're writing a, why it's repeating. If you're writing n, it's also repeating. If you write u, it will also repeat. Wait, not you here. I want you here. It's repeating for everyone. I don't want to. I want to update or modify this code. Like I will write here y/n, then ask user yes or no. If a is double equals to yes, then print whatever. Else break. Maybe I think it will work or not, I don't know. Yes, I want to repeat. Bro, bro, the code got error. It's not error, but it's got something fishy. I have to say. Okay, let's see the code in this program. It will keep repeating the code until the user enters anything other than S. Oh, wait a minute. I didn't thought this. Wait a second. I want to check. Run this code, man. No, the code is running still. Which means there is mistake in the code. I will write one break.
Then I will run. I don't want to repeat, man. Let it be. It's the mistake of him, not me. So I will leave it. Here, example code where we are. Actually, we are in a loop state. Then why it is showing me condition question types? Here it's, I think it's remembering again to us. Set the total to 0 to the start with while the total is 50 or less. Ask the user to input a number, add the number to the total and the print the message the total is total. Stop the loop when the total is over 50. Yeah, I know while loops are too dirty, but we have to. Okay, friends, we will do it. We can do it. It's basically saying that I don't want this rubbish code on my PC, so I am deleting this. And this. It's saying set total. After giving total to 0, while the total is 50 or less, the user input. I want to see the code. I don't think so. I'm getting the code. Who is watching my stream? Please like, give a like, friends. Support me. Please watching my stream. Please like. I don't like while loop, friend. Seriously.
No, I said less than or equals to I, then no. Hmm. Maybe our code is running, but it's not running according to condition. Let's check if we give 40, if we give 55. Oh, I understand now what it's doing. It's asking enter a number. Then it is asking again, enter a number. Then it is adding that number in that. Whoa, nice. If it is 66, I mean it's above 50, it's only printing the number. If it is below 50, if we again write the another number, it will add it. Indirectly golmal is some golmal. Like I will show you. First of all, print 55. Not here, man. Print 55 here. It will directly print 55. If you print 50 here, then again 50, it's asking again. It will show 100. Yeah, pretty impressive, but still I don't like that. Next, 46. Ask the user to enter a number. Keep asking until they enter a value over pi, and then display the message the last number you enter was this, and stop the program. Okay. Here we use break program or not? I want to see this. Everything will not look like what we want. Let it be control A, comment, and then start the program. N equals to 0, M is equals to input, and not like this, it's something different code man. Want to see again it. Num is equals to 0 while okay. Is this num equals to 5, then print M, M now. Oh yeah, print. No, the code is not running, friends. I think I have to check again what happened in the code. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है
Unless we don't use the break, it will not stop. I think so. How it's saying like this to me? I think who made this code, he was little bit confused. I think so. Because it's not actually working the code, I think so. Wait a second. I want to do some changes here. Here keeping n. Then I want to check this. Uh-huh. And then number 5. And then number 4. Ah, now it's running. Actually, we made a little mistake. Okay. Like here, the initial value of n is equal to 0. Then it's asking while loop that if n is greater or less than 5, if it is less than and equals to 5, it will print again. If it is greater, if the n value is greater, then it will stop. Basically, I mean, nice one, bro. Nice. Didn't do mistake. I did the mistake. Okay. Now we go to the next question 47. Ask the user to enter a number and then enter another number, add these two numbers together, and then ask if you want to add another number. If they enter y, ask them enter another number to keep adding the number until they do not answer y. Once the loop has stopped this total. The run rate, let's run the code. Number 8. Yes, I want to add 9. No, I don't want to add now. Nice one, yeah. I want to see what he did. Number is equals to int input enter a number. Then the total equals to num1. But he didn't give total equals to 0, then how it is saying total equals to 1? If you want to print again y, while again means double equals to y, down to input t. I really don't like this type of codes. So guys, you can practice these questions by saying this. I don't want to write. I don't want to disturb my mood. So let's see how much we have streamed till. It's around 50 minutes, guys. Yeah, we are close.
Who is this? Nice. Let's push the code. Oh, yeah. This page. What is 48? Ask for a name of somebody the user wants to invite to the party. After display the message name has been invited, add one to count. If then want to invite somebody else, keep repeating this until no longer they want to invite the party. Basically, I will say this in Hindi. एक बंदे को पार्टी में बुलाने का है, वो बंदे का नाम ऐड करोगे लिस्ट में तो वो +1 होगा। यानी बंदे में 4 लोग आ रहे हैं, यानी पार्टी में 4 लोग आ रहे हैं। अगर आपको एक बंदे को ऐड करना है तो वो पार्टी में 5 लोग हो जाएंगे इनडायरेक्टली। अगर 5 लोग हो जाएंगे वो पार्टी में, देन इनवाइट समबडी एल्स। जब तक अगर आपको मतलब आपको समझ गए कि इतने लोग को बुलाने का है, इतने लोग आ गए, तो आप बंद कर सकते हैं अपने कोड को। अगर आपको और बुलाना है तो आप और बुला सकते हैं। बेसिकली वही है कोड। तो जाके देखते हैं हमारा कोड क्या है कि अगेन में वाई लिख दिया बंदे ने, काउंट 0 है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल वाई इज इक्वल टू वाई नेम इनपुट एंटर ए नंबर इफ वांट टू ऐड इफ यू वांट ओके हैज नो बीन इनवाइटेड। उसका नाम डाल के वो इनवाइट हो गया बोलते, काउंट में +1 आएगा। ठीक है। अगेन इनपुट इज इक्वल टू हमें इनवाइट करने का है, ओके। अगर मैं एन करूंगा, वाई नहीं होके एन करूंगा तो रुक जाएगा वो कोड। चलो एक कोड कॉपी कर लेते हैं। फटे। चलिए कोड लिखा। रन करके देखते हैं दोस्तों। रन करने से पहले स्पॉट आएंगे। पटाखे वापस रन करेंगे, देखिए। नाइस।
49 create a variable for student. You do on yourself, guys. 49, 50, 51. I don't like the wild loops basically. So I don't want to proceed to the next. Or hell with the- By the way, this code is very nice. Like it's a game. You can enjoy it. Like I want to show you. Control V, Control Slash here, Control V, this and run this. Right, 77 too high. Right, 66 too high. Right, 20 too low. 4 too low. If we write 50, well done, you took 5 attempts. Basically, here count is adding our attempts, not the number what we want. If we keep this, so like if we remove this, what will happen? I want to see. Hmm. But this is not a question. Then, okay. Okay, leave it, guys. Let's move to the import and export values. Guys, until as you read this page, I will come in short minutes. I will come in few minutes.
It is actually taking random numbers like C, you can see here. 1, it took 9, it took 4, it taken 3, 6, again 2, again 0, 6, 9, 7, 8, random. Actually random.
Here actually the random looks like I want to show you how the random actually works. These are the rubbish questions I want to just show you. Like first of all, you want to know the list, how to use list. After learning about list, then you will come to the import. Like in the PDF, it's look like the PDF is for the people who are well known for the Python language. If the person who don't know the Python language, he don't understand like here. In the PDF, you see that it's using like wait a second in dot py. Here you can see he using list. The person don't know about the list. How can he choose? How can he make this? He will get confused. So before that, I want to say I have already done the live stream on a list. You can see that it's actually very good. If you don't want to see, now I will explain how the list works. Like you can create list like this, but if you want to make a list like n equals to square brackets, it is also list. If you print n, it will give you empty list. Yeah, you can see that. If you want to append, I mean, you have to append anything like n dot append. This function will add. This function will add anything in the list. Like you want to add 10. Like for suppose you want to add 10, then you want to add like list will take anything, literally anything. If you want to add, now you have added the integer. Now you want to float value. If you want to add 10.9, you will add that also. If you want to append a string, you will add that also too. If you run, it will not do anything because you didn't print it. If you print like print n, now you will run this code, or suppose it will print 10, 10.9 and no more. This is how the append works. If you sort, I mean, if you sort something in this 10 dot, you want to pop, if you use pop, then you will print to print n, then one thing will remove from this. You can see Numan got removed, the last one. If you remove particularly one thing, I mean, if you want to remove only 10, not 10.9, then you can do like n dot 10, sorry, n dot remove and 10. Then you print n and you can see there is 10.9. Like at the first we pop, then we got this, then we remove 10 and we got this. If you want, I mean, I can show you like this. If like second, no, I want to remove this, I want to remove this and this also. Okay, if you use comment, it will look better. I mean, if I use comment, it looks better. I think so. Here, tab. Wait a second, what's happening here? Man, I want to type here. What? Here you can see. Bro, use this. Wait, what is happening? Just tap
Tap, 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 tap. I want to tap here, man. I'm getting irritated. Here, the last one in the list get removed. Okay, and here the specific number get removed. Okay, here it is adding. Here append means adding anything in the list. Okay, like now, oh, I want to say that if you want to append one or more thing, you can use one more trick, that is end.extend. End.extend. Now you use bracket, then inside bracket 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50, then you print, and now you can see, let's see, m equals to, let's see, now I want to run. I think now it should run. Yeah, we got this. Now you have, instead of appending anything, you just appended, I mean you added many numbers at a time in a single line. If you want to remove all this at a time, what you can do? Neither removing nor popping. Can remove all by just dot, by just writing. I mean, yeah, I have to write here that extend will add more than one number in the list. Now remove. I want to remove something, like I want to clear everything. N dot clear. Then print n.
Then if you print n, it's empty list. Like before clearing, you have these numbers. You can see this these numbers. After using clear, you got empty bracket. Now comment all this. I will show you sort method. I mean literally sorting anything. Like here, n is equals to empty list. Empty list. Then here n dot extend bracket square bracket 6 randomly. I'm adding randomly numbers like 5732 comma 1 comma what is not having 4 comma 8 comma 6. I will print here print n, and I will also use n dot sort. Then I will enter print n. Then you can see a list will create and it will add these numbers 57321486. And then I will use sort. It will print in ascending order like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's see. Yeah, you can see this. We given the numbers according randomly, then it given according to the serial wise. How the sort function will work like this. If you want to find something in the list, right, you can get anything where it is. You can find anything in the position like n dot find. Wait a second. I think it should not work like this. M is equals to n dot find and n dot. Okay, find something you forgot. By the way, you can reverse the list also. I will show you that first. Like dot n dot reverse. Then you print n. For your clear understanding, I will write like this. Reverse the number sorting extending. Wait, guys, I got some work. You can check this page.
मैं फोटो का ऐसे दिखते रहेगा। गाइस वी आर बैक। थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी दोस्तों, तो हम लोग चले गए थे। कोई बात नहीं, हम लोग दिखाएंगे आप क्या कर सकते हैं। अब देखो, आपको हिंदी में अच्छा खासा समझा दूंगा कि इसको कैसे करने का है। एंड हम लोग क्या करें, एक एम्प्टी ब्रैकेट बनाए, उसके बाद में हम लोग एक्सटेंड करे, बस सॉर्ट करे, बाद रिवर्स करे। अब एक्सटेंड से क्या होता है बोले तो एक साथ ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी एक से ज्यादा नंबर एक्सटेंड हो जाते हैं। सॉर्ट क्या है बोले तो आपको अगर जो भी तेरह बिंगे जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। अब उसको रिवर्स कर दे, समझो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाते हैं। ये हो गया हमारी तरीका का एक तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। लिख के अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ और करने का है, लाइक समथिंग। अब हम लोग रिवर्स कर दिए, पॉप कर दिए, इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करने का है। इंसर्ट भी एक तरीके का वही ऑप्शन है कि हम लोग को ऐड करने का है, यानी इसके पोजीशन में मेरे को ये ऐड करने का है। अब मेरे को क्या करना है बोले तो, अब हम लोग 9 आएगा ना, 9 की जगह पे मेरे को कुछ और इंसर्ट करने का है। इंसर्ट दबाऊंगा, डाले बाद 8 डॉट इंसर्ट, सॉरी, एन डॉट इंसर्ट। एक की जगह पे हम लोग करेंगे 200 को प्रिंट, 2200 को प्रिंट। प्रिंट करे बाद क्या करेंगे, हम 1200 की प्रिंट एन करेंगे। अगर आप रन करोगे तो आपको ये जगह पे 2 दिखेगा, समझे ना। अब हम लोगों को क्या करने का है, सॉर्ट करने का है। सॉर्ट हम लोगों को अब उसको रिमूव करने का है। हम लोग डिलीट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं रिमूव हो गया। तो इस तरह से ये काम करेगा। ये हो गया लिस्टिंग के थोड़े बहुत मेथड्स। लिस्टिंग और बहुत बड़ी है, उसको और तरीके से कर सकते हैं। और सॉर्ट कर दिए, काउंट करने, अगर आपको कितने हैं इसमें काउंट करने का है तो आप ऐसा भी काउंट कर सकते हैं कि जैसा आपको काउंट करने का है ना, तो काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये करेंगे, लाइक प्रिंट
काउंट प्रिंट काउंट एन डॉट कॉम। काउंट एक से करेंगे कि वन बाय वन करेंगे? स्किपिंग तो कुछ भी नहीं होगी, तो आप रन कर देते हैं। काउंट वन, वन वन की जगह पे है। काउंट एट करेंगे। ठीक है। इस तरह से लिस्टिंग काम करती है दोस्तों। देखो लिस्ट लिस्ट इधर है दोस्तों, लिस्ट बहुत देर है, इस देर से ही मर के आप दो लिस्ट देखूंगा। लिस्ट के आपको डायरेक्ट कोड दिखाऊंगा मैं कैसे करने का है। अब टपल्स है दोस्तों, टपल्स क्या है बोले तो कुछ भी नहीं, आप जब स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जगह पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे नॉर्मल ब्रैकेट्स, कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए, क्या कंट्री है, कंट्री में आपको क्या लिख रहा है, फ्रांस लिख रहे हैं, इंग्लैंड लिख रहे हैं, स्पेन लिख रहे हैं, जर्मनी लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हैं, कंट्री टपल कर रहा है तो पूरे एक तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। और प्रिंट करने के बाद आपको इनपुट में क्या करने का, एंटर वन कंट्री फ्रॉम द एबो बोल के आने का, तो आपको प्रिंट कंट्री बोल लिख देंगे। आपको बोले तो जो कंट्री आपको लिखने का है, हैज इंडेक्स नंबर कंट्री टपल इंडेक्स कंट्री। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको लिखूंगा ये करके एक सेकेंड। लाइक आप यहाँ देखिए, आपको ये करके दिखाऊंगा। और उसको बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक हम बना ही दे देगा वो। देखिए, कुछ नहीं, लिस्ट कैसा है सिर्फ, उसमें मैं स्पेन करने का। स्पेन कैपिटल में है, वो देखना भूल गया मैं, शी। छोटी छोटी गलतियां भी वो लोग वो कर देंगे। इंडेक्स बोला तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इंडेक्स लिस्ट में भी इस्तेमाल होगा, पुटाबल्स में भी इस्तेमाल होगा। यानी वो कुछ पोजीशन पे है, किधर है वो मालूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप फाइंड करने का है, फाइंड नहीं करके आप इंडेक्स इस्तेमाल करें, एक तरीका है ये आपको समझाने के लिए। उसके बाद में देखो, यहाँ भी वो कर रहा है, सेम सेम का इंडेक्सिंग कर रहा है। अगर इनपुट इंटर नंबर जीरो फ्रॉम कंट्री आइएगा। स्पोर्ट्स लिस्टिंग है, टेनिस है, फुटबॉल है, आपको उसमें अपेंड करने का है, आपको क्या अपेंड करने का है, ये लिस्ट के अंदर है चीज। आपको कौन सा स्पोर्ट अपेंड करने का है, आप वो स्पोर्ट को अपेंड कर सकते हैं। और शॉर्ट बोले तो आपको क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन आएगा, यानी अल्फाबेटिकल वे में आएगा। वो छोटी चीज है। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का लिस्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटिंग है, हिस्ट्री है, साइंस है, स्पेनिश है। आप प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट करेंगे तो एक साथ आपको पूरे लिस्ट के प्रिंट हो गया आएगा। आपको जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इनपुट में लिख दो कि आपको कुछ कुछ पसंद नहीं है। आप गेट द रीड बोले तो वो सब्जेक्ट को आपको पसंद नहीं है, उसको निकालने का है बोले तो वो उसका पोजीशन क्या है मान करने का है। सब्जेक्ट लिस्ट लिखो, इंडेक्स लिखो, पूरा लिखे लिखे बाद आपको डिसलाइक है। डेल इस्तेमाल करते हैं, मैं याद आ रहा था, डिलीट नहीं करके डेल डेल बोलते हैं उसको, डिलीट नहीं बोलते हैं, डेल बोलते हैं। अब उसको आप डेल कर सकते, डिलीट कर सकते हैं आप वो सब्जेक्ट को। और सपोज आपको मैं करके दिखाऊंगा एंड करके।
भाई डायरेक्ट लाइव इसलिए क्योंकि लाइव करने से रीच आई भाई, बहुत बहुत नए नए लोग आके देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई, नवारा की भाई? आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ दोस्तों, में जरा मालूम नहीं हो रहा कि आप कब आ रहे किधर जा रहे हो, वो सब इसलिए। दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, ये कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेके आप इधर आएंगे, आके कंट्रोल एन दबाएंगे। कंट्रोल एन दबा के न्यू 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 डॉट पी वाई बोल के लिख देंगे। उसके बाद रन कर देंगे। उसके बाद रन कर दिए समझो। उसके बाद आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ देखना है गेम। आपको कौन सा पसंद इसमें, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है इसमें? वैसे तो मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, बट हम आपको मैथ्स तो हम लोग डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते। तो चलो, तो बाद में मैथ्स को मालूम है तो मेरे को मार देगा वो। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हो? सच हम लोग क्या करेंगे, नहीं सब तो पसंद नहीं है मुझे। मैथ्स को ही निकालते हैं। मैथ्स चल जा, चलेगा मैथ्स। कैसे क्या, आपको समझाऊंगा। गेट ट्रीट, उसमें आपको इंडेक्स दिखाएगा। इंडेक्स क्या है मैथ्स का? वन है। उसके बाद डिलीट सब्जेक्ट गेट ट्रीट। गेट ट्रीट में हमको इंडेक्स मालूम है कि वन पे मैक्स है हमारे को। तो वो डिलीट क्या करेगा, वो इंडेक्स को करेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, सब हमारा सब्जेक्ट हमारे को आ जाएगा। ये एक तरीके का वे है। आपको क्या है, अब फुल डिक्शनरी बना रहे हैं। भाई ये बंदा ने सीधा डिक्शनरी पे आ गया। वाह भाई, कमाल है। डिक्शनरी भी बहुत आसान है दोस्तों, आपको डिक्शनरी भी समझा दूंगा बहुत। ये क्या है बोले तो ये पूरे कनेक्ट है एक दूसरे के लिए। डिक्शनरी लिस्ट अब जो भी होते हैं ये पूरे एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। तो आप कनेक्टेड होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं मालूम है? सबसे आसान चीज क्या है बोले तो आपको दिखाऊंगा इसी में। ये बंदा सीधा डिक्शनरी पे ले गया बंदा। उसके बाद इंपोर्ट्स में जाएंगे भाई। इंपोर्ट्स बोल के बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा वो, ऐसा थोड़ी है। ये एडवांस कुछ नहीं है मगर की रहेगा ना। जो भी नए नए हैं वो लोग समझ में नहीं आएंगे ना। कंट्रोल एन दबा देंगे तो डिक्शनरी है ना, इसलिए कंट्रोल एन दबा देंगे और उसको डिक्शनरी के नाम से सेव करेंगे। अब यहाँ रन करेंगे। अब ये डिक्शनरी बन गया। अब पहले आपको समझाऊंगा कोड, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा, आपको समझा रहा हूँ मैं। तो क्या है बोले तो हम एक फूड की डिक्शनरी बना रहे हैं। फ्लेवर ब्रैकेट्स डाल देंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फूड ऐड करेंगे। आपको कौन सा फूड पसंद है वो ऐड कर दो आप इसके अंदर। उसके बाद आपका सेकंड फूड बोलो, आपको दूसरा फूड और क्या चाहिए आपको बोले वो ऐड कर दो। ऐसा बारी बारी आप सब ऐड कर रहे हो, वो भी लिस्ट के वे में। अब जब करेंगे प्रिंट तो वो लिस्ट के वे में आएगा। आपको जो पसंद नहीं है वो आप उसको निकाल लीजिए वापस। आप करके दिखाऊंगा रन उसको। लाइक मुझे पसंद है बिरयानी। और क्या पसंद है बोले तो रोटी, रुमाली की रोटी पसंद है कि रोटी लिखो। और मीठा, मीठा कुछ भी चल जाएगा। और थोड़ा बहुत आइसक्रीम नहीं पसंद था हमारी, थोड़ा थोड़ा पसंद आ गया और वापस पसंद नहीं आ रहा नहीं। अब इसमें से मेरे को क्या निकालने का है, चार को निकालने का है मेरे को। ये है चार चलेगी मेरी जिंदगी से। वाह, मजा आया दोस्त, मजा आया। ये बहुत रिलेटेड हो गया इसलिए बहुत मजा आया। समझे? समझ में रहे हो? समझ रहे हो? आपको नहीं, मेरे दोस्त को समझ में आ जाएगा। गोटेड है ये।
Check out the stuff. Check out the stuff. Fantastic. You're not the bottom. Check out the stuff. Fantastic. You're not. गोटेड चीज हो गई दोस्तों। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इंस्टा पे स्टोरी लगेगी ये कोड की। आसान कोड है भाई, आप सब कर सकते हैं इसे। लिस्ट में आप क्या करेंगे, आप ये कोड अगर 75 कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अंदर लूप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें इफ एल्स कंडीशंस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अंदर इंडेक्सिंग भी इस्तेमाल हो रही है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी इस्तेमाल हो रहा है। और सपोज समझाऊंगा, ये नंबर है, अब आई इन नम्स प्रिंट आई करो, यानी क्या होगा, ये पूरे लिस्ट के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। उसमें से आप एक चीज को बोलो तो एक नंबर को चूज करो, अगर सिलेक्शन अगर वो नंबर्स में होगा तो उसका पोजीशन ये है बोल के वो आपको बताएगा, अगर ना होगा तो ये लिस्ट में नहीं होगा बोल के। बहुत अच्छा कोड है ये, बहुत 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 अच्छा कोड है ये। आपको समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। लाइक एक कमेंट कर दो दोस्तों आगे जो भी हो। कॉपी कर लो, कॉपी कर रहे पूरी जिंदगी। पोजीशन वन पे है, समझ में आया आपको। अगर आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मैं ये लिखूंगा वो नहीं है इसके अंदर, सिंपल चीज, सिंपल। और ये कोड में भी बहुत चीजें इस्तेमाल हो रही है, लाइक इसमें वाइल लूप आ रहा, जो हमारा कट्टर दुश्मन भी है हमारा दोस्त भी है एक तरीके से। नेम लिखो, पार्टी में कुछ बुलाने का है, और उसके बाद में और के नेम लिखो, अगर वो भी पसंद नहीं है तो और के नाम लिखो। आप तीनों को बुलाओ पार्टी में, और तीनों को पार्टी में बुलाए बाद और किसी को बुलाने का है तो आप यस दबा दो, वाई दबा दो, इससे क्या होगा, आएगा और एक बंदा। अगर और के नाम ऐड कर रहे हैं और आ रहा हूँ नहीं, 202 मिनट। क्या
दोस्तों मैं जरा नमाज जाके आता हूँ, जब तक आप एक कोड को देखिए। तो आप एक कोड्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए।
ये मस्जिद से जाके नमाज पढ़ा मैंने सोची तो बोल रहे हैं, नमाज की कोताही बहुत करता है देखती हूँ मैं। वही मामू मस्जिद तो गया तो क्या था। उधर भी बोले नहीं, यूट्यूब पे सब सुनाया हम कि यूट्यूब चल रहा हूँ सामने। उसे क्या हुआ था। मैं सुन रहा तो मस्जिद मुझे देखने वाला था। मैं कुछ हाँ दे दे हाँ बैठे ना मैं खुशी रहती कि ये तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं। 5 मिनट का ब्रेक हो गया। चलो बंद कर देते हैं, जैसे 5 मिनट का ब्रेक हो गया। तो आपने कोड को समझा या नहीं? बेसिकली कोड क्या बोल रहा है बोले तो, आपको नेम 1 है, नेम 2 है, नेम 3 है, ये लोग हम लोग को पार्टी में बुलाने का है। अगर आपको और बुलाना है तो आप और बुला सकते हैं, और उस वक्त के तीनों के नाम लिख लिए हम लोग। और तीनों के नाम भी आपको और किसको तो बुलाने हैं, तो और आप किसको बुला लिया, कुछ भी नहीं। बेसिकली सबको अपेंड कर रहे हैं अपन लिस्ट में। आओ आओ आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। उसके बाद में आपको इंडेक्स निकालने का है। इंडेक्स यानी आपको वो आदमी को नाम दिखाने का है कि एंटर वन ऑफ द नेम। अब उसमें से आपको इसका नाम लेने का है, और उसके पोजीशन मालूम करने का। पोजीशन मालूम करने का बोले तो इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सिलेक्शंस में हम लोग वो लिखे हैं, इसलिए हम लोग इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ। और किसको तो बुलाने का है, क्या आप कितने बार बुलाएगा एक इंसान को, तो उसमें उतने बार बुलाना पड़ेगा कि इसके इनपुट बोल के हम लोग डाले इसके अंदर, डाल के उसको बुला रहे। अगर यस बोलो तो यस, एन बोलो तो एन। इफ स्टिल कम इज इक्वल टू एन, पार्टी रिमूव सिलेक्शंस, यानी वो जो बंदे को है वो निकालने की। उसके बाद में प्रिंट पार्टी लाइक। नहीं को देखो आप, कोड रन कर दिखा दो। एक किराक कोड है पहले तो, अच्छा कोड है, मतलब किराक कोड मतलब अच्छा कोड है। ये इतने सारे इंड एग्जाम्स है दोस्तों। ये इंड एग्जाम में वेतन करना बोले तो नहीं होगा, फ्री माइंड होना चाहिए पाइथन करने के लिए, अच्छा खासा माइंड। अब जब अपन सुकून से कर सकते हैं इसको। ये कहीं ऐसा कोडिंग नहीं होगी भाई, इसको कोडिंग नहीं बोलते, इसको रट्टा मारना बोलते हैं, जो अपन इतने साल से कर लेते आ रहे हैं। बिग वन। पहले तो मेरे पार्टी में मैं अपने आप को बुला दूंगा। उसके बाद एक बंदे का नाम लिखेंगे ये, और एक ये, और बुलाने का है भाई मेरे को। बंदे का नाम लिया बंदा आसिफ। खत्म बात।
हेलो, एक मिनट रुक, कर दो देखो फोन पीछे रुक। हेलो अमान, अस्सलाम वालेकुम। अरे साइलेंट पे रहता रे, मेरा फोन है। हाँ रे, करा। उसके बाद फोन वहाँ कोने में फेंके तो वापस देखो, तो जब तक फोन उठाना है तो कट कर दे रहा फोन तुझ। हाँ, मैं आदत लगी हो कॉलेज की वजह से। हाँ हाँ हाँ, इसमें पढ़ा मैं। अब बोले तो तेरे भाई को एडमिशन दे रहा है उसमें। अब कौन कौन है, तेरे मम्मी को पास हुआ है। टाइटन में डालता बोल रहा है, एमसेट में, वैसा पूछ रहा तुम्हें क्यों। कॉलेज अच्छा है मर की, वो सर नहीं है जो जो हमारे साथ था सपोर्ट करता, सो वो बंदा नहीं है, दूसरा कोई नया है, नया मान उसके बारे में। अब देख, स्पार्क में डाला तो अच्छा है था टाइटन से। अम्मी एक सेकेंड, अम्मी कर दो, मैं फोन एक सेकेंड रुको। हम्म। क्या हुआ अम्मी? तो स्कूल में था। हेलो, ये क्या बोलते हैं, तो अमान साजिश है क्या? हाँ तो क्या बोलते हैं, सुन सुन, एक बार अच्छा सजेशन देना बोले तो आप अब्दुल का भी एक हाशिम बोल गया है, अब सेकेंड ईयर कर रहा है, एडू में से अपना अब्दुल। हाँ अब्दुल मुफीद। उसका एक भाई यानी मतलब भेजा था दोस्त, हाशिम बोल के सेकेंड ईयर कर रहा है टाइटन में, आप एडू में। उससे अगर बात करें तो अच्छा बोलता, कैसा चल रहा फैकल्टी और पढ़ाई कैसे चल रही है कैसे। और टाइटन मेंस का है, एमसेट का है, स्पार क्या है बोले तो मेंस, टाइटन एडवांस और मेंस बोले सब है। स्पार्क में एडवांस आता बोले तो। हाँ
ये अमान तेरे बाजू ही है, फोन कर रहा मेरे को। हाँ तो सुन ना, ये सुन सुन, तू किससे बात कर रहा तू आएगा सर? हाँ तो सुन, हम बोलता हूँ। और जो तू शटरा वाला देखा ब्लॉक, जो टीना से देख, टीना वाला। हाँ तो तो टीना वाला में स्पार्क था, टाइटन में था, लास्ट के 2 रूम में टाइटन के रहते, स्टार्टिंग के 3 रूम में स्पार्क के रहते। तो साले देखते वैसे हमारे वैसे इन लोगों ने। हेलो। हॉस्टल के रूम में रईस रहते थे, हॉस्टल में नहीं डालना। और ये हम लोग क्या लोग वैसे बोलते नहीं, वो क्लास अभी वहीं छोड़ते। तो वो एक बिल्डिंग में नहीं आते थे लोग। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ फेल बोल के, ऊपर से हमारे सारा भी नहीं है जो हमारे पढ़ा है, उन लोग के भी जरा बेटर थे उन लोग। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्दुल का भाई हाशिम बोल के, इसको फोन करे तो अब भी छोड़े सेकेंड ईयर, ये साल खत्म करा हूँ। इसको बोले तो जरा अच्छा बोलता हूँ। इसलिए तू फोकस में जाना रे, फोकस में जाना, अगर तेरे को सही अच्छा पढ़ाना है उन्हें। तो अल्ताफ बोला अभी से, अल्ताफ अभी बोला मेंस। आईसी में आपको लगा आईसी डालना वेस्ट, इंटरमीडिएट वो वेस्ट, हो वेस्ट हो। आईसी और वीओ में जाए नको, नाम ही नको आईसी वीओ का। हाँ तो तू, अगर ऐसा एडी में जाना है तो फोकस से लेना ले तो, या तो कुछ भी नहीं लेना। फोकस कहीं लेना बोले तो बिल्डिंग भी अच्छी है, बैठने का तरीका भी अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी पूरा डिजिटल का पड़ा, तो पैसे से अच्छा बुक करूंगा। हाँ आईपी लास्ट 2 महीने में पढ़ा कर लो। हाँ उतना ही जो होगा, अरे उतना क्या है, अपना उंगली उसमें पड़े हीरो। हाँ सही बोला, मैं आराम से घर के लिए अपना लिए। और आल फोर्स में आपको गली में होगी, रेजोनेंस में तो डालता नहीं। अरे पीडब्ल्यू का नया खुला ना है वरांगल में, उसमें ट्राई नहीं करोगे? उसमें ट्राई करो एक बार, फिजिक्स वाला। से मम्मी है सर, अभी भी काम कर रहे हैं। अरे उन्होंने कर रहे बोले तो अच्छे से बात कर ले, देख लो एक बार। इससे तो बहुत बेटर ही चले, ये अपने कॉलेज से। इंटर में पढ़ा तो मुझे मेरे ख्याल से। क्या है कि बात करें देख ले, अब क्या हो गया, फिर क्या रिजल्ट आ गया? हाँ ठीक है लगा, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए वापिस। और देखो दोस्तों ये सब तो हो गया आपको। आप लिस्ट हो गया देख लिए, ये भी देख लिए। वाइल लूप कैसे इस्तेमाल करें, लिस्ट में नम्स लिखे, जीरो लिखे, काउंट जीरो है। काउंट अगर 3 से कम है तो इनपुट लिखो, उसके बाद में फिर लिस्ट हो गया। ओके, ये हो गया। अब लिस्ट के बाद आपको क्या दिखाएगा बोले तो मोर स्ट्रिंग्स एंड मैनिपुलेशंस। स्ट्रिंग्स में और क्या कर सकते हैं अपन। स्ट्रिंग्स में बहुत चीज़ें कर सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल नेम साइमन लिखे है, साइमन को आप क्या है, ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यूज है। और ये भी पूरे इंडेक्स वैल्यूज है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहा हूँ, अपर केस तो मालूम है आपको कैसा करते हैं। आई सुपर क्या है बोलो तो एग्जांपल द बिलो मैसेज वेरिएबल कंटेन मोर स्ट्रिंग्स लाइक आई इज लोअर है, इज लोअर, मैसेज इज सुपर, मैसेज इज अपर, मैसेज इज लोअर। बोलो तो पूछना अपर केस और लोअर केस जैसे ही करेगा काम हो। और आपको ये क्या है बोलो तो एंड एल बोल के जो है, जब अपन स्पेस देंगे वो स्पेस के अंदर क्या होगा, आपको स्टार आ जाएगा। वो स्टार के प्लेस में आप क्या भी रख सकते हैं, वो जगह पे आपको वो आ जाएगा डिस्प्ले होके। तो वो एक है। और क्या है बोले तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस है, आपको चैलेंजेस देखते देखते समझ में आते हैं। अब एफ नेम है बोले तो नेम है, नेम के अंदर इनपुट लिख रहे हैं राइट, और फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, उसके बाद में प्रिंट दैट हैज लेन एफ नेम बोल के है, बोल लेंथ कितना है वो कैरेक्टर का, कैरेक्टर इन बोल के लिखे है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, पर लेटर इन सब्जेक्ट प्रिंट लेटर एंड एल बोले तो आपको दिखाया ना, मैंने तो एंड एल को आप करके दिखाया कि वो क्या होगा कि ऐसा वर्टिकल नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, वर्टिकल में आएगा। तो वो इस तरीके का है। कोई हम प्रिंट करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग क्या है, एंटर द स्टार्टिंग नंबर लिखो, तो उधर तक आएगा कि वो उधर तक प्रिंट होगा, किधर से लेके किधर तक प्रिंट करना होगा, उधर से उधर तक प्रिंट हो जाएगा। ये तो पूरे बेसिक क्वेश्चन है, आपको उतना कठिन दिखेगा बोले तो उतना मुश्किल दिखेगा नहीं है। इसके बाद में क्या है बोले तो मैसेज इनपुट है, इनपुट में अपर केस लिखने का है, ट्राई अगेन इक्वल्स टू फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो वो नहीं होगा, नहीं है बोले तो वो हो जाएगा। ये सही है कि कोड है ये, समझे आप। ये होगा अरेज। अरेज में हम क्या करेंगे, थोड़े दिन के बाद आएंगे कि बोले तो वो अरेज बोले तो कुछ जरा अच्छा लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में बोले तो जरा टाइम लगेगा और समझने में भी जरा दिक्कत होगी, इसलिए आपको क्या होगा, आपको बाद में समझाऊंगा। बोले तो कुछ अच्छा, बोले तो हम भी सीखेंगे, उसके बाद सीखे बाद आपको सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली अगर ये पीडीएफ आपके पास है बोले तो आप एक तरीके से प्रॉपर बन जाएंगे आप, एक तरीके से। इंपोर्ट के पूरे सिस्टम आपको बाद में समझाऊंगा, पहले तो इंपोर्ट में भी थोड़ा बहुत बीच में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो इंपोर्ट में आपको नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा मैं। तो बेसिकली आप एंड एग्जाम सारे ये सिस्टम आपको बाद में समझा दूंगा। और बेसिकली एक बात बोलने का है कि मेरे को बोले तो ये छोड़ ही दो, आप कॉलेज का तरीका छोड़ दो, तो तरीका आपको अपने तरीके से पढ़ना होगा। और ये हॉलीडेज जो आने वाले हैं दो 3 महीने के कॉलेज की तरफ से, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा पाइथन को झाड़ के फोड़ के फेंक दूंगा। तो हमारा लाइव स्ट्रीम यहीं तक ही एंड कर देंगे दोस्तों। और आपको जाने से पहले मैं अपना कोड दिखाऊंगा, बोले तो मेरा गिटहब दिखाऊंगा। आप कैसा है गिटहब, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि मेरा गिटहब कैसा है। एक सेकेंड पहले स्कैन कर दूं मैं। चलो अब इसको कट कर देंगे और व्हाट्सएप को भी कट कर देंगे। बंदे समझते नहीं भाई, मेरा फोन साइलेंट रहता बोले तो कोई समझता नहीं है। भाई 24 व्यूज आए हैं आज के स्ट्रीम में। और भाई आपका जो कमेंट है मैंने नहीं देखा, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। आपके कमेंट के अस्सलाम वालेकुम, अच्छा वालेकुम सलाम। अब भाई आपने न्यू चैनल बनाया है, ये तो डायरेक्ट लाइव क्यों भाई, आप देखिए लाइव करने की वजह से आप लोग आगे मेरा देख रहे हैं, इसलिए आपको लाइव डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद में टेडी हूँ। उसके बाद में क्या है, नाइस ब्रदर, लव इट, ओके लव इट ब्रो, नाइस ब्रदर, डूइंग गुड, ठीक है शुक्रिया भाई। वो नाइस शॉट, क्या शॉट मारा भाई मैंने, अच्छा अच्छा एक्सप्रेस अच्छा कर रहा हूँ, ओके ओके ओके। तो यो नाइस यार, नाइस ब्रो नाइस। 48 व्यूज लिटरली ब्रो, कमाल हो गया ये तो। 48 व्यूज क्या मजाक की बात नहीं है।
ये रिदा का दम क्या है, मैं चुप के फोना पे फोना कर रही। उसके चप्पल है तो क्या करना अपन, कहीं घुमाएगा तो चप्पल। हाँ। 40 पर 5 लोग हैं, 40 पर 8 लोग हैं, देखो हमारा। क्या देखो, तू बनाया तो। लाइव लाइव मेरे साथ देखे ना। तू बनाया है या दूसरा बनाया? मतलब माइस बनाया, मैं दूसरे के ही बनाया है। तेरे दोस्तों ने भेजा। और दोस्तों भी भेजा। दोस्तों भी भेजा था। थोड़ा रियल लोग भी देखे, थोड़ा सब्सक्राइब भी करे मालूम। इसीलिए अगर ये पीडीएफ आपके पास है बोले तो आप एक तरीके से। तो दोस्तों मेरा गिटहब दिखा दूंगा आपको। मेरी वॉइस ऑन थी जब से, वाह, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी वॉलपेपर बहुत अच्छा है नहीं दोस्तों। चलो आपको दिखाऊंगा मैं। रिपोजिटरीज कहाँ हो तुम? ये मेरे रिपोजिटरीज है, इतनी मेहनत करा था मैं, कब करा था, क्या क्या करा था इसके अंदर, वो सब लिख के आएगा। और मेरी मेरी प्रोफाइल दिखा दूं मैं तो आप चौंकोगे ना, मर की करी है कुछ मेहनत। 161 कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं। और ये एंड एग्जाम और मिड एग्जाम की वजह से पूरा टाइम टेबल खराब हो गया। मगर मैं दोस्तों वादा कर दो कि छुट्टियां में ये जो जो भी कलर आ दिख रहे हैं खाली खाली ब्लैक कलर के, पूरे ग्रीन करके फेंक दूंगा, पूरा रोज कर करके प्रैक्टिस। समझे हो? एक लेवल है, रेंज बढ़ाएंगे अपना। समझे? चलो दोस्तों स्ट्रीम को खत्म करते हैं यार, बहुत मजा आया बहुत इस बार स्ट्रीम में करके। लिटरली 2 घंटे 30 मिनट की हुई स्ट्रीम। चलो, अंटिल देन साइनिंग आउट। जो जो भी सब्सक्राइब करे शुक्रिया, लाइक करे शुक्रिया, बाय।